Today's topic is your conditional sentence. It is in your plus 2 curriculum. Apart from that, for competitive point of view, this topic is also very important and very essential. So we should know from the beginning, आमମାନଙ୍କର ଗୋଟେ thought ରହିବା ଦରକାର ଯେ conditional sentence କ'ଣ? What is a conditional sentence? Suppose I write one sentence like so. If he invites me, I may join the party. If he invites me, I may join the party. You just mark the sentence. If he invites me, I may join the party. In this sentence, how many clauses are you getting? Get that clause poucha? You get here 2 clauses. I mean, 2 clause poucha. Okay. So the beginning clause here it generally starts from if. If you start it. And if you know, here it is used as a conjunction. इस जगह में if को कौन करी? conjunction करके use करी. Subordinating conjunction. जेहेतु ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड ए सेंटेंस भितर ये हो गए जदि ठीक अच्छे ये सेंस ही दौर जदि से इनवाइट कर मु पार्टी अटेंड कर पारे ता माने ये सेंटेंस रे फ्रॉम द बिगिनिंग दिस इफ क्लॉज हियर इट इज योर यू मे से दिस इज योर इफ क्लॉज और यू मे से बट कौन कहीपर इफ क्लॉज बोली कहीपर और वी कैन से इट वन कंडीशनल क्लॉज एंड दिस क्लॉज आई मे जॉइन द पार्टी दिस वन दिस इज योर मेन क्लॉज सो दिस इज योर कंडीशनल क्लॉज एंड दिस इज मेन क्लॉज सो व्हेन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इट जॉइन्स विथ वन मेन क्लॉज गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज से गोटे मेन क्लॉज व्हेन दे फॉर्म वन सेंटेंस दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक को सेंटेंस कहते complex sentence and in this complex sentence now we get 2 clauses आम जगह में 2 clause पाइले 2 clause कौन पाइले first clause it is your conditional clause and the second one it is also known as your main clause हाँ एमती भी पारे conditional one conditional sentence ये जगह में जो if यूज करी ना कौन यूज करी if यूज करी तो सब जगह if यूज करी बोली माने नहीं एमती भी किसी अच्छी unless मैं यूज करी पारिबी supposing यूज करी पारिबी ओके प्रोवाइडेड दैट यूज कर नॉट दैट कि केवल इफ ही कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज आरंभ हम से केस रे मु ऑल अदर कंजक्शंस आर देयर ऑल अदर फ्रेजेस आर देयर तो यूज कर पारिबी ठीक अछि दैट वी विल डिस्कस लेटर से जिन समय पर डिस्कशन करबा बट फ्रॉम द बिगिनिंग यू नो व्हेनेवर वी फॉर्म ए कंडीशनल सेंटेंस दिस कंडीशनल सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लॉजेस वन इज योर इफ क्लॉज एंड अनदर इज योर main clause गोटे नबा में if clause आउट में नबा main clause and taking those 2 clauses से दीका का clause को देखी whenever we join we get one conditional sentence so this conditional sentence when we write आम जो लिखा है sentence को from the beginning we can write if clause आम if clause को beginning में लिखी परिबा then after that putting one comma mark we can write the main clause or we can also interchange them I mean we can write the main clause at the beginning without any comma I can write the if clause ठीक अच्छे मेन क्लॉज को आम आग लिखी दे पारिबा तापर विदाउट एनी कमा आम इफ क्लॉज को लिखि परिबा और इफ वी टेक द इफ क्लॉज एट द बिगिनिंग फर्स्ट वी राइट द इफ क्लॉज देन आफ्टर पुटिंग कमा देन वी कैन राइट द मेन क्लॉज लाइकवाइज वी कैन फॉर्म वन कंडीशनल सेंटेंस सो रिमेंबर वन थिंग वन कंडीशनल सेंटेंस इट इज वन complex sentence here have the complex sentence and in this sentence we will get 2 clauses one is your subordinate clause the subordinate clause generally starts from if which is known as your कौन तब आम कौ क्लॉज कहवा इफ क्लॉज बोली कहवा एंड अनदर क्लॉज इज योर मेन क्लॉज एंड हियर यू रिमेंबर दिस इफ ही इनवाइट्स मी दिस इज द कंडीशन आई कैन राइट हियर दिस इज द कंडीशन आई मे जॉइन द पार्टी ओके दिस इज द इफेक्ट और result first one is the condition and second one is the result this condition happens then the result happens okay so this is your conditional clause and the main clause actually this is the effect or region of the conditional clause eta conditional clause ra effect or region ko express karo all of you clear so whenever we form any conditional sentence you keep it in mind there definitely we will get 2 clauses ame se jagare 2 clause paiba the clause which refers to condition
that is your conditional clause which starts from if. All of you clear? So this conditional sentence, whenever we use a conditional sentence, we get different situations. Different situation पाई पिला माने हमें different conditional sentence को use करी पारिबा and accordingly its rules will be also changed. तार rule भी से अनुसार change होगा. ठीक अछि. So in our day-to-day life, for different situations जेतबेले आसीबो हमें different conditional sentence को use करी पारिबा. How we use them? So we should know how the conditions are made or what sort of conditional sentences we commonly use. हमें को sentence को हमें commonly use करछे. That we have to see here. Okay, you mark here. Suppose I write one sentence. If you hit ice, it melts. This is one. Number two. If he arrives in time, he may get the bus. Number three, if he were my friend, he would help me. If I had saved money, I would have bought a car. If I had saved money, I would have bought a car. Likewise, now I have written here 4 types of sentences and all are your what? Conditional sentence. जो चारिटा मु लेखिली ये चारिटा काला conditional sentence. तो we should know हमें के जानिया दरकार जे ये जो conditional sentence whatever I have written here जहाँ भी लिखी छी हाँ ये conditional sentence रो logic कौन ये माने कौन शो करती फर्स्ट वन तुम्हें देखो if you hit ice it melts. If you hit ice, it melts. ठीक है. So this is such a sentence here. You mark the conditional clause and you mark also the main clause. So both of the clauses. If you hit ice, it melts. It refers to a fact. It refers to one fact. एक fact को ही express करछ. So some conditionals they refer to any fact. So what sort of conditional we can say them? तो मन में कौन कहि परिबा? They are open condition. Okay. These sort of conditions, ये जो condition वगैरह रहिबो एमन को हमें कहि परिबा कौन? Open condition. Open condition. ठीक अछि. हाइलाइट कर दूची. This sort of condition, they are known as your open condition. Second one you mark. If he arrives in time, he may get the bus. So here the speaker is in present. Speaker present रहे अछि. Okay. I will discuss it one by one. Okay. So if he arrives in time, he may get the bus. So here it refers to the probability, refers to the possibility. एमाने probability बा possibility को ही show करूँ. So these sort of condition, एक type का जो condition है से, एक condition का मैं कौन कहूँ? They are condition to express probable. Okay. The condition, this condition, एमान का मैं कौन कहूँ? Probable condition. Okay. They are probable or referring to future. Probability, possibility, एमाने यही show करते, probability show करते, possibility show करते, एमान का मैं कौन कहूँगा? Such condition, ए type of condition जितने ऐसी हो, they are probable condition. Then, if he were my friend, he would help me. So this is such a condition. एक बड़ा condition. If he were my friend, I'll discuss it elaborately. Such condition. जो जगह रे the speaker it refers to speaker's imagination. It refers to what? The imagination of the
स्पीकर स्पीकर कौन इमाजिन कर व्हिच इज नॉट रियल जोटा रियल नुहे ठीक अच्छे से इमाजिन ही करुँचे जदि मोर सांग हुआ से मत हेल्प करता माने फैक्ट कौन से मोर सांग नुहे से मत हेल्प करनी ओके सो व्हेन सच कंडीशंस कम जो ए टाइप कंडीशन आसे ए कंडीशन को कहुए कौन दिस कंडीशन इज फैक्ट इमाजिनारी और ताको मु एक कथा भी लिखि परिबी फैक्ट कौन लिखि परिबी सेमी क्लोज्ड कंडीशन एमान को कौन कहि परिबी इमेजिनरी और सेमी क्लोज ठीक अच्छे इमेजिनरी और सेमी क्लोज्ड कंडीशन एमान को लिखि परिबी एंड द लास्ट वन इफ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बॉट अ कार मींस हियर दिस एक्शन आई इट मींस आई डिड नॉट सेव मनी आई कुड नॉट बाय अ कार सो एक्शन हैपेंस इन पास्ट एक्शन पास्ट रही स्पीकर कौन कर स्पीकर इज नाउ इन प्रेजेंट स्पीकर को जगह अच्छे प्रेजेंट अच्छी सो when the speaker is in present and he describes about any closed action of past that action closed in past I did not save money in past I couldn't buy a car ये भी past तो past घटना को स्पीकर एबे ही और प्रेजेंट रे एक्सप्रेस करूची प्रेजेंट रे जो भी एक्सप्रेस करूची बा प्रेजेंट रे व्हाट द स्पीकर सेज दैट इज नॉट रियल रियल कौन ये जो सेंटेंस लिखा है ना जदि मु पैसा सेव करी थांती मु कार किनी थांती ता माने तो जना पड़ा तू पैसा सेव करी नु पास्ट रे करी नाउ कि तू कार किनी जदि करी थांती कार किनी पारी थांती so this set of condition it is your unreal past you may say hypothesis or you may say this is your closed condition closed this set of condition is known as your closed condition or unreal past unreal past you may say this is hypothetical also you can say so generally we will face these four kinds of conditional sentence another condition is also there that is known as a mixed condition कौन कहा जाए mixed condition बोली कहा जाए so mixed condition its structure is completely different I will discuss about it first of all it is will तुम मान को मुंडा आगे इतनी रहो जे whenever we think of a conditional sentence there must be the reflection of two clauses in our mind आमर मुंड भितर दुईटा क्लज चलवा दरकार गोटाए क्लज रही इफ क्लज और कंडीशनल क्लज हाँ दैट ऑल्सो कीप इट इन माइंड देयर इज नो ग्यारंटी दैट ऑल द कंडीशनल क्लजेस विल स्टार्ट फ्रॉम इफ सबू कंडीशनल क्लज इफ रु स्टार्ट हो बोली किसी माने नहीं मु अनलेस यूज करि परिबी मु शुड भी यूज करि परिबी मु प्रोवाइडेड दैट यूज करि परिबी मु सपोजिंग यूज करि परिबी सपोज दैट यूज करि परिबी बहुत किछि यूज करि परिबी का केस रे इन द प्लेस ऑफ इफ ओके बट कॉमनली इट स्टार्ट्स फ्रॉम इफ कॉमनली माने इफ रु आरंभ होती तेणु तार ना हिच कौन इफ क्लज भी बहुत जगह कहते बा यू टेक ए कंडीशनल क्लज बस दिस मच ऑल ऑफ यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस समझते बुझीपार ठीक ठाक हाँ सो ये चारिटा कंडीशनल सेंटेंस को लेकिन स्पेशली तुमर सिलेबस जो क्वेश्चन सब अच्छी ये चारिटा कंडीशन उपर जनरली आसे आउे आम आउ टे एक्सटेंसिव पढ़ा मिक्स कंडीशनल कौन मिक्स कंडीशन कौन ओमिशन ऑफ इफ कौन बस ताको आम नेक्स्ट क्लास रे बा नेक्स्ट एपिसोड रे पुणी आम पढ़ा ताको सो फॉर this must to give you one impression what are the conditional sentences. So as our channel is going on newly, okay, so it is to all to those our online learners and offline learners, you share, subscribe and like our YouTube channel. You can get it as soon as possible in YouTube channel. आ सेति भी नुहे +2 पिला मान को कहि दउची हमर जो निजर ऐप अछि हमर ओन ऐप रे मध्ये एही वीडियो लेक्चर गुडा आम लोड करदेव सो दैट एक क्लास रू गला तुम्हें से पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को तुम्हें थ्रू आवर आप डीके इंग्लिश जो आप अच्छी से आप लोड हो तो तुम्हें घर को जावापर तुम्हें आउ थे भी देखिपर सो दैट योर डाउट विल बी क्लीयर एंड देन आफ्टर इन ऑफलाइन क्लास यू मे आस्क मी डाउट आर थ्रू आवर आप यू मे ऑल्सो पुट मी क्वेश्चंस ओके